नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है बर्ड्स अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं। एंड आई हैव a very interesting and exciting panel with me here to talk on this subject of how birds build nests, why birds build nests, and we will also be talking about a lot of interesting ecological aspects of birds. And then there is going to be a very interesting demo of how you can make a birdhouse at home. So please subscribe it if you haven't done yet and watch till the end. Over to Tanya. Good evening, everyone. Am I Tanya, audible, sir? could you put your camera on? Ajay? Okay. Our host is experiencing some problem, it seems. And till the time she's here, maybe Akash could come on air and tell us something a little bit about the subject. Hello everyone. So finally we are back with another session, and today we are talking about most important session and topic of all time, birds. And we've been doing a lot of things regarding bird from in Growing Foundation. So from last year, last past 2 years, we've been doing Nylon Manja campaign, and we've been getting very amazing response for that. So hopefully till next year we're going to ban nylon manja. You won't able to see nylon manjas in market, which are actually more harmful to the birds. And today we have most amazing person, and he's been us since past 1 year. And let's get started. Chetan, are you there? Yes, Hello? yes. Yeah. Hello. Right. So let's start the show, Chetan, and we would like to know what all the things you know about the birds, and so what you can bring us today on the plate. And our viewers are very eagerly waiting for you today. So here we go. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. What I've seen with every summer, there is one excitement and one fear among the nature lovers. Excitement for mangoes and fear for what bird will do in this summer for water and all. So ये एक tension होता है, डर होता है. मतलब recent years में I have seen articles on newspaper as well कि birds बात के लिए अपील कर रहे हैं newspaper में, and other wildlifers and ecologists also. So what I was thinking today is to cover some behavioral adaptations made by birds during summer. Why it is necessary for us to keep them, keep bird baths for them, bird houses for them, and what are the ecological importance of birds? Why it is very much essential कि हम उनके ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्यों उन सब पे काम कर रहे हैं. तो पहले हम थोड़ा इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, देन आई विल कम टू देयर अडेप्टेशन स्पेशली फॉर समर्स. तो अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड इटसेल्फ इज a complete reflection of nature. मतलब birding is being very much popular these days among the youths, and as a most recent flourishing hobby among the youths. The reason is because this is a very beautiful, small, observable, moving element which they can find in their backyard as well. तो हम लोग बर्ड्स को देख के काफी सारी चीजें समझ सकते हैं अबाउट नेचर. लाइक बर्ड इज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कॉमन किंगफिशर, तो वो हमको हमेशा फ्रेश वाटर के पास में मिलेगा जिसका पीएच समवेयर अराउंड 7 है. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो वी हैव ब्लैक विंग स्टिल जो जनरली पॉल्यूटेड वाटर के आसपास मिलता है. Similarly, अभी you might have heard a bird continuously calling cuckoo, cuckoo, cuckoo. We call it a brain fever or Asian coil. तो ये जो बर्ड है ये एक मतलब बायो इंडिकेटर है ऑफ समर सीजन की. नाउ वी कैन क्लियरली से कि हाँ समर स्टार्ट हो गया है. सो उसके अलावा वी हैव सो मेनी बायो इंडिकेटर्स देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लैक काइट की अगर हम बात करें हमको सिटी की फिल्दी एरियाज में देखने मिलेगा. यू माइट हैव नोटिस ब्लैक काइट इन नागपुर अगर आप देखते हैं तो बिहाइंड रेलवे स्टेशन इन मोमिनपुरा रीजन वहाँ पे
होता है, या किसी भी जगह पर जहाँ पे नॉनवेज शॉप्स हैं या कचरा डंप किया जाता है, यू मे फाइंड ब्लैक काइट एंड हाउस क्रोज देयर. So these birds have their special habitat, have their special role in ecology and environment. If you see small bird, जिसको हम सनबर्ड बोलते हैं, वेरी कॉमन पीपल या यंगस्टर, बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में, जिनको नया नया फैक्ट पता चलता है कि वर्ल्ड का सबसे छोटा बर्ड हमिंग बर्ड है, तो वो सनबर्ड को हमिंग बर्ड समझ के मिसगाइड हो जाते हैं. तो वो बर्ड जो है उसका बीक पे अगर आप ध्यान दोगे तो इट इज पॉइंटेड बीक, जो फ्लावर पे फीड करता है, पॉलिनेशन में मदद करता है. देन फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आर वेरी एक्सेलेंट पॉलिनेटर, सीड डिस्पर्सर्स एज वेल. वो फ्रूट्स खाते हैं और सीड उनके पेट में जाता है, और उनके एलिमेंट्री कैनाल से जब तक वो सीड नहीं जाएगा तब तक के उसका जो इंटीग्यूमेंट्स है, उसका जो सीड है वो भी ब्रेक नहीं होता है. तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वो फ्रूट ईटिंग बर्ड के एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास हो. इसीलिए शायद आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे गोंडल गोंडल बारीक बारीक सीड्स है, लेकिन जर्मिनेट नहीं होते. एंड वहीं आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बिल्डिंग से कॉर्नर पे जहाँ थोड़ा सा सीपेज है, वाटर लीकेज है, वहाँ पे पीपल या बरगद का सैपलिंग उगना शुरू हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स. अब उनको सॉइल नहीं मिल रहा तो बेचारे बिल्डिंग पे उगना शुरू हो जा रहे हैं. तो बर्ड से ही, बर्ड्स के एलिमेंट्री कैनाल से वो सीड पास होकर वो सीड डिस्पर्स हो रहा है, एंड दैट्स हाउ इट इज हेल्पिंग इन सीड डिस्पर्शन. सो बर्ड्स आर वेरी गुड हेल्पर ऑफ नेचर इन ग्रोइंग ट्रीज एंड जंगल. So there are lot many such examples of we can see. और उसके अलावा हम लोग अगर देखें तो जो हमारा जो कैटल ईग्रेट है, ब्लैक विंग स्टिल्ट है, these are the birds have been an inspiration for our ऋषि मुनीज to design various yoga posture. तो जैसे हम लोगों का योगा का पोस्टर होता है, वो काफी कुछ योगा के पोस्टर्स ये बर्ड के सिटिंग पैटर्न से भी इंस्पायर्ड है. So birds act as a pollinator, bioindicator, seed dispersals. They also lives in harmony with human beings. Like if I call about there are few group of birds जिनको सलीम अली सर जनरली टाउन dwellers बोलते हैं, जिसमें हमारे आते हैं हाउस क्रो, स्पैरो, सनबर्ड, इवन स्पॉटेड आउलेट. ठीक है, तो these birds stay somewhere close to the human residence क्योंकि they are directly और indirectly dependent on us. अब हर वाइल्ड बर्ड की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो टाउन dwellers birds है उन लोगों का हम लोगों से डायरेक्ट रिलेशन है. नाउ दे हैव अडैप्टेड सो मच ऑन अस, दे कैन नॉट लिव विदाउट अस. हमारे वेस्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट है, हमारे अबैंडेंट हाउस के ऊपर वो डिपेंडेंट है, हमारे अबैंडेंट जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन बना के छोड़ दिया, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट. हमारे बैकयार्ड में जो फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स है, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट. सो दे हैव एडजस्टेड एंड अडैप्टेड देमसेल्व्स अलोंग विद द ह्यूमन सेटलमेंट्स. सो आज का टॉक जो है लेट्स मेक बर्ड हाउसेस या बर्ड नेस्टिंग बिहेवियर से रिलेटेड. तो ये जो टाउन ड्वेलर्स बर्ड्स हैं विच आर लिस्टेड इन दिस कैटेगरी, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. और एज आई स्टार्टेड द टॉक, हम लोग जैसे मैंने बोला कि समर आते आते जो बर्ड लवर्स है उनका एक टेंशन बढ़ जाता है. दे यूज टू कीप वन वाटर बाथ एट देयर होम, ये सोच के कि बर्ड्स हीट कैसे रेगुलेट करेंगे, पानी उनको पानी चाहिए होगा. तो उसके पीछे जो क्रूशियल रीजन है उसके लिए हम लोगों को बर्ड का फिजिकल और बिहेवियरल अडेप्टेशन समझना भी जरूरी है. बिकॉज बीइंग अ वार्म ब्लडेड एनिमल, अब वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? These are those organisms जो अपना body temperature खुद regulate करते हैं with respect to surrounding. Like we human beings can withstand with a broad range of temperature. We have human beings living in the Siachen as well, and we have human beings living in Nagpur and Chandrapur as well, the highest city with highest temperature in India. So from -10 degree to +40-50 degree Celsius हम लोग withstand कर सकते हैं. So that is what our being warm bloodedness is. तो हमारा ये वार्म ब्लडेड बिहेवियर इज हेल्पिंग अस टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्वेट ग्लैंड्स, जो कि बर्ड के पास नहीं होते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड ऑल अदर मैमल्स हैव स्वेट ग्लैंड्स, बट बर्ड्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स. तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं? तो इन लोगों के पास कुछ फिजिकल अडेप्टेशन है. फिजिकल अडेप्टेशन में हम लोग एक देख सकते हैं इनका बीक साइज. इट इज फाउंड बाय द स्टडीज दैट कि जो बर्ड का बीक ज्यादा बड़ा है, they are more comfortable to dissipate heat from their body. वो ज्यादा इजीली अपने बॉडी से हीट डिसिपेट कर पाते हैं. सेकेंड, आपने कभी नोटिस किया होगा बर्ड को बहुत केयरफुली, तो दे हैव सम बेयर पैचेस ऑन देयर बॉडी जिसमें फेदर नहीं होते हैं उनके बॉडी में. लाइक उनके बीक और माउथ पार्ट्स में आपको देखने मिलेगा. बहुत कॉमन बर्ड में अगर हम देखें तो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स में हम लोग को कॉक्स, जो हमारे नॉर्मल फाउल्स होते हैं, मुर्गियों में तुम उनके चेहरे के पास देखोगे तो दे हैव सम स्प्रेस्ड वैटल्स जो फेदर नहीं होता उसमें. दे आर बेयर बॉडी सरफेस. तो बेयर बॉडी सरफेस इज देयर टू डेसिपेट हीट. सिमिलरली यू कैन फाइंड इट इन देयर लेग्स एंड फीट. उनका फीट और लेग जो रहेगा
उसमें भी दे डोंट हैव फेदर्स एनी कवरिंग्स, बिकॉज फ्रॉम दैट बॉडी सरफेस दे डेसिपेट देयर हीट. तो बड़ा बीक होना, बीक का शेप हेल्प्स देम टू डेसिपेट हीट एंड रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. देन बेयर बॉडी पार्ट्स, और उसके अलावा देयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन से भी हमसे बहुत ज्यादा हाई होता है. दे रेस्पायर वेरी रैपिडली, फास्टली, जिससे भी वो अपनी हीट डेसिपेट कर पाते हैं. एंड जैसे वी ह्यूमन बींग्स आर वार्म ब्लडेड, आर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. बर्ड्स का और थोड़ा ज्यादा होता है, समवेयर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस. मीन्स हमसे थोड़ा ज्यादा हायर टेम्परेचर दे कैन बेयर, but they cannot live very comfortably in high temperature. So that's why that is a point of worry. तो ये उनके कुछ physical adaptation है in these many years that they have adapted in themselves to dissipate heat from their body. उसके अलावा उन लोगों में कुछ यूनिक बिहेवियर भी हमको देखने मिला है. जैसे उनकी लेवल ऑफ एक्टिविटीज की हम बात करें तो थ्रू आउट द डे टाइम बर्ड्स रिमेन वेरी लेस एक्टिव, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स. वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उन लोगों के लिए अपनी बॉडी की हीट रेगुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनको भी लू लग सकती है, एज वी कैन से फॉर ह्यूमंस. तो उसी तरीके से उन लोगों को भी हीट के कारण दिक्कत आ सकती है. तो दे जनरली डोंट प्रीफर टू रिमेन वेरी मच एक्टिव एट द डे टाइम. तो वो अर्ली मॉर्निंग, सनराइज और सनसेट के साथ, या जब एटमॉस्फेयर में हीट कम है तब हमको ज्यादा एक्टिव या एक्टिव पाए जाते हैं. So उनकी level of activity also changes with surrounding temperature. So they prefer to remain active in the cool environment. Then second thing, उन लोगों का एक soaring behavior होता है. Soaring behavior means flying at a high height. बहुत ऊंची हाइट पे वो उड़ते हैं. You might have seen, मतलब हम commonly तो उनको चील बोल देते हैं, but they are a group of birds which are called as birds of prey. तो उनका तुमने एक बहुत common behavior notice किया होगा that they fly at very great height. तो वो उस हाइट पे क्यों उड़ते हैं? बिकॉज एज यू गो हायर एंड हायर विद इन दिस फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर बिकम्स लो. तो वो जिस हाइट पे उड़ते हैं वहां टेम्परेचर कम है, तो दिन की धूप की गर्मी क्यों ना हो, यू माइट हैव सीन बर्ड्स ऑफ प्रे सोरिंग इन द स्काई. द रीजन इज अगेन टू रिमेन एक्टिव एट फेवरेबल टेम्परेचर. उसके अलावा भी बर्ड्स में और भी कुछ बिहेवियर देखे गए हैं, जैसे पैंटिंग. टर्म वी यूज इज पैंटिंग. तो पैंटिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग वेरी क्विकली. तो बर्ड्स लोग कई बार इट इज टेकन एज अ इंटरप्रिटेशन दैट बर्ड्स ओपन अ वाइड बीक माउथ ओपन एंड तो उसे ऐसा माना जाता है कि शायद इनको प्यास लगी तो वी मस्ट सर्व देम वाटर. बट दैट इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन वी कैन से, बट दैट इज एक्चुअली अ पैंटिंग. वो अपना बीक वाइड ओपन रख के बहुत ज्यादा विगरसली और रैपिडली ब्रीथ करते हैं ताकि अंदर की हीट वो बाहर फेंक सकें. So they regularly and very quickly keeps on breathing. So that phenomena is known as panting. फिर उसके अलावा they very unique behavior which is generally observed in moderate sized bird and very commonly seen in vultures. They do urohyrides. मतलब वो अपने ही पैरों पर टॉयलेट करके उसका एटमॉस्फेयर थोड़ा सा क्लीन रखना, मतलब ऑटो टेम्परेचर रेगुलेशन बिहेवियर वो रख सकते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज इवैपोरेटिंग. ठीक है. सो दैट इज मेनली विच, बट बाकी सारे और कुछ बर्ड्स करते हैं ऐसा बिहेवियर. एंड देयर इज वन मोर बिहेवियर विच इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज गुलर फ्लटरिंग. तो अगर हम गुलर फ्लटरिंग की बात करें तो ये बहुत कॉमन टेक्निक है. मेनी ऑफ द बर्ड्स प्रैक्टिस इट फॉर कूलिंग देमसेल्फ. यू माइट हैव, अगर आप बहुत रेगुलरली बर्ड वॉचिंग करते हैं, बर्ड्स बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, तो शायद आपने देखा होगा कि बर्ड्स कभी कभी गार्गलिंग जैसा बिहेवियर करता है. So that gargling type of behavior is known as gular fluttering. This is again for the regulation of body temperature. अपनी शरीर की हीट बाहर निकाल के फेंकता है. See, just they don't have sweat glands in their body. They have to take so much extra efforts to dissipate their heat. और उसके अलावा during summer, the most important thing that they do is seeking for water bodies, seeking for waters. तो ये लोग मतलब आपने बहुत ज्यादा कॉमनली देखा होगा, कॉमन मैना, कोयल, इन सब को वाटर बॉडी में जाते हैं, दे टेक बाथ. दैट इज देयर बिहेवियर वेयर दे सीक फॉर वाटर्स. तो यहाँ पे जाके वो लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को पूरा तरीके से भिगो लेते हैं, गीला कर लेते हैं, नहाने का तरीके का एक एक्टिविटी करते हैं. तो दैट इज अगेन द सेम रिपीटेड एक्टिविटी टू मेंटेन देयर बॉडी हीट. तो ड्यूरिंग समर वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो है पर वो स्वेटिंग नहीं कर सकते हमारी तरह, इसलिए उन लोगों के शरीर में इतना सब कुछ उनको फिजिकल अडेप्टेशन एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन डेवलप करना पड़ा जस्ट टू डेसिपेट देयर हीट. तो इन सब चीजों को, why I'm conferring all these topics for you in front of you, the only concern is
कि with this coming summer we will learn how to make bird houses. Akash and Tanya will guide us for that, and what are basic responsibilities to take care of these birds. So in this long discussion, let me revise and sum up all the topic that we have discussed till now. सबसे पहले हम लोगों ने कुछ फिजिकल भी अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा कि उनके बॉडी में कुछ बेयर पैचेस होते हैं टू डेसिपेट हीट, उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है, एंड फिर हमने बिहेवियरल में पढ़ा कि वो पैंटिंग करते हैं, मतलब बहुत उनकी ब्रीदिंग रेट बहुत क्विकली ब्रीथ करने लगते हैं, हाइट डेसिपेट करने के लिए वो लोग गुलर फ्लटरिंग करते हैं जिससे दे डेसिपेट हीट अगेन, एंड दे ऑल्सो सीक फॉर वाटर बॉडीज. तो ये कुछ उनके बिहेवियर्स हैं जो हम लोग को ऑब्जर्व करने मिलते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स. Observed by the group of birds, they fly at the great height to keep themselves in a cool temperature. तो ये सारी चीजें they generally perform to keep themselves cool, क्योंकि warm blooded animal है तो they have to regulate their body temperature. That is, और warm blooded animals की सबसे ज्यादा एनर्जी, बॉडी का more than 90% energy is invested in keeping their body cool. You might have came across facts कि अजगर जो है एक बार खाता है और 4-6 महीना सोया रहता है. तो क्यों ऐसा है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है. So organism, those who are cold blooded, they eat once or twice in 3, but being a warm blooded animal, eat food twice to thrice a day. The reason is we have to invest so much energy to regulate body temperature. So warm blooded animals ऐसा behavior रखते हैं, और warm blooded animals के पास sweat glands देखने मिलते हैं, but birds do not sweat glands. So they have adapted themselves to regulate this temperature. So surrounding का increasing heat है, and they are taking so much extra, they are investing so much energy just to regulate their body temperature. So it is our duty there, because they are dependent on us. There are many birds those who are dependent settlement. अब वो wild में उतने comfortable हैं जितने comfortable हमारे बीच में रहते हैं, like rock, laughing dove, house sparrow, sunbird, geese, spotted owlet, house crow, and then black kite. These are all the birds those who are dependent settlements. So we take us efforts for them. So what we can do? First thing, display Groville Foundation and in the mission लोग को जंगल urban forest उगाने. So that is the important thing. Because और urban forest में भी हमारा approach क्या होना चाहिए? Native trees को बनाए, because native help them in with necessary temperature, and native tree provide them natural. ठीक है, हम लोग जो बुश रहेगा, जो कैनोपी रहेगा, उसको फेवरेबल और उनको खाने के नेचुरल फूड मिल जाएगा. उसके अलावा वी कैन बेड बाथ्स फॉर देम. मतलब ऐसा बर्तन होता है, काफी लोग भी करते होंगे. वो अगर हम लोग बर्ड उसमें 5 में से पी सकती है, उसमें आके वो सीकिंग फॉर वाटर वाला जो बिहेवियर है खुद को नहाने का, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. So these are, we can also keep bird houses. This will be guided by teammates now. तो ये सारे approaches हमारे होने चाहिए for the summer. Approaching summer will be थोड़ा गलत, because already summer has. So these are the practices we must take. We are healthy and safe in this high summer. So that's all behavioral. Yes. Hello, Akash. So wow, just amazing चेतन, कितना सारा नॉलेज आपने बता दिया है वन गो में. एंड बहुत सारे इनसाइट तो मुझे भी नहीं पता थे कि ऐसा सब कुछ करते हैं लोग. एंड इवन दो वी बीन गोइंग थ्रू मेनी टाइम्स टुगेदर. सो बेसिकली एवरीवन, वी चेतन, मी एंड देन फ्रॉम नागपुर, लॉकडाउन लगने से पहले वी यूज्ड टू गो फॉर रेगुलर बर्ड वॉचिंग, जहाँ पे अक्रॉस नागपुर के 30 to 40 रेडार के साइड में हम जाके what kind of species Nagpur does have, ये बहुत लोगों को पता नहीं कि we have such a tremendous treasure when it comes to birds. So once the everything lockdown situation gets over finally, so what we can do is people can join us. The number is there in the screen. You can either go on our Instagram and DM us if you love bird watching. So we would love to take you there, but after the lockdown session gets over. And ये समर में last year we have thought some of the activities we can do for the bird. So this time we have come up with our foundation's first product, and that is bird house. So basically we will providing you bird house kit where it will contain 7 pieces. You just have to assemble it. It's very simple and easy. So we'll provide you everything.
So Tanya, do you have that birdhouse with you right now? Yes, I have. Yeah. Sunshine, am I visible? Abhishek, can we get Tanya on screen? Yeah. Hello, Public Sector Birdhouse. Yeah. So that's the front, side, and back. So you can see there is a slit underneath the roof from the sides. Yeah. So they are, from there the air can pass, and you can show the front, Tanya, of the birdhouse. Yeah. So the basically the size of that hole is 5 mm. So only birds can enter there, and no predators can enter. That's why the size is very less of that hole. Yeah. And sir, we have some videos also uploaded, and if you can play them, people would love to see how much birds love our birdhouse. Yes. So you can see the application of our birdhouse. And if you would like to hang this birdhouse at your place, please DM us on Instagram or provided number over there. So we would like to connect you. And let's this summer help the beautiful creatures, birds find their shelter, and we can provide them food, water, everything they like. And it's been I think 3 weeks. I've been friends with those birds now, and they are not scared of me. And here's the Tana showing how quick and easily you can make the birdhouse. She is using the glue gun, but we will provide you our adhesive as well. Yes. So that was our birdhouse. So Abhik sir, any final words to our viewers? I think Abhik sir is busy right now. Yeah, I have a few things to say. First of all, I'd like to thank everybody for joining in this live stream. And today the topic was birdhouse, bird nests, ecological importance of birds, and the likes. And we have seen that Tanya, Akash, and Chetan have done a wonderful presentation जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे चीजों के बारे में पता चल गया है. And in the constant endeavor of Groville Foundation to bring some amazing new ideas to the city of Nagpur, we have come out with this very interesting modular product. This is a birdhouse kit which we have here for you, and we are very happy to bring this as a product which all of you can buy from our website in future. In the meanwhile, if you are interested in buying this, my number is displayed on the bottom of the screen. आकाश, मुझे तो लगता है एक बार फिर से हमको वो बर्ड हाउस बनाने वाला वीडियो दिखाना चाहिए लोगों को. Yes, sir, you can play that. So she started with a base, and she started assembling the sides, fronts and sides. Once you establish the foundation, then you can go for the roofs, and your birdhouse is ready. So it's that simple. So you can give this activity to your kids this lockdown, and you can go very creative with this birdhouse. Try to color the roof with the different palettes. So that's why we kept it very clean, and so you can color it by your favorite colors. Please don't go very
very bold and very pokey color, because bird doesn't like that. So take a color palette which is there in the nature, and we go creative with this birdhouse. And please connect us if you would like to have this birdhouse. We are waiting for you. Thank you. Okay, so I think it's time. So we're going to pack up, and we'll come back with another topic, with another interesting session. And I would like to thank Chetan, Tanya, for joining us, and of course Chetan, for your wonderful support and the tremendous knowledge about the birds. And I would like to tell our viewers that if you would like to join our team of bird watchers, please you can connect the same. Thank you so much. Good night, everyone. Thank you for watching. Bye. Bye.